Okay, let's do this quickly. E raised to the power minus x sin x, that's the function. Again, it has one stationary point. We have to find the x coordinate of the stationary point. Stationary point कैसे find करते हैं? Find the derivative dy by dx find कर. ठीक है? Now we can't differentiate it directly. It's a product. ये product है, दो expressions multiply हो रहे हैं. We have to use the product rule for this. This is u and this is v. We can write them on a side. E raised to the power minus x u है. V is sin x. तो u dash क्या हो जाएगा? E raised to the power minus x into minus 1, which is minus e raised to the power minus x, and v dash is cos of x. Is that clear? E raised to the power minus x का derivative, e raised to the power minus x as it is, और फिर minus x के derivative से multiply कर दिया, which is minus 1, so minus 1 यहाँ पर आ गया. ठीक है, sin का derivative cos, and now we just apply the product rule, uv dash plus vu dash. That gives us e raised to the power minus x into v, which is sin x, plus v is sin x, sorry, v dash kya tha? It was cos x. E raised to the power minus x into cos x plus sin x into u dash, which is minus e raised to the power minus x, and that gives us e raised to the power minus x cos x minus e raised to the power minus x sin x. That's the derivative. Okay. So we just applied the product rule on this. We had two expressions being multiplied, u into v. हमने उसका product rule apply किया, so it became uv dash plus vu dash. Okay. What do we do now? Since we have to find stationary point, we put this derivative equal to 0. 0 से equate कर दिया. And now we have to solve this equation. How do you solve this equation? Take e common, e raised to the power minus x common ले लें, and that gives us cos x minus sin x, that equals 0. Okay? And now we can say either e raised to the power minus x equals 0, because we have a product, two things are being multiplied, the result is 0. That's only possible if at least one of them is equal to 0. So either e raised to the power minus x equals 0 or cos x minus sin x equals 0. यहाँ पर दो equations आ गई. E raised to the power minus x equals 0. यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा हमें. If you use log, you will get an error on the right side. Log of 0 is undefined. From the right side, we've got cos x equals sin x. We can divide by cos x. And we've got 1 here, and that gives us tan x equals 1. So we've got a trigonometric equation now, tan x equals 1. How do we solve this? We find the basic angle. Tan alpha equals 1. इसका जो basic angle आएगा वो आप देख लें क्या आता है. The interval is from 0 to pi. Okay, so interval यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से लेकर pi तक. So we have to give our answer in terms of radians. Keep that in mind. It can't be in degrees. Radians में होना चाहिए. Tan inverse of 1 is going to be pi over 4. अब tan यहाँ पे positive है. Positive tan किन quadrants में होता है? It's the first quadrant and the third quadrant. लेकिन क्योंकि आपका interval सिर्फ 0 से pi तक है, we can't be in the third quadrant. So it's only the first quadrant. First quadrant में आपको सिर्फ यही वाली value चाहिए. That is x equals pi over 4. This is your final result. X equals pi over 4. Second part में उसने कहा है determine whether this is a maximum point or a minimum point. आपके पास derivative था already. Derivative was e raised to the power minus x cos x minus e raised to the power minus x sin x. इनको कॉमन लेकर लिख लेते हैं.
we have this derivative cos x minus sin x. ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था. तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y over dx square. How do we differentiate this again? We'll have to apply the product rule again because ये दो expressions multiply हो रहे हैं. So we'll say this is u and this is v. uv dash plus vu dash. What do we get? U as it is, e raised to power minus x into derivative of v. Cos के derivative क्या होता है? Minus sin. Sin के derivative cos x. Plus e raised to power minus x का derivative. That's e raised to power minus x into minus 1 and cos x minus sin x as it is. If you simplify this, you get minus e raised to power minus x sin x minus e raised to power minus x cos x minus e raised to power minus x cos x plus e raised to power minus x sin x. Sin cancel हो गई and we are left cos x. इसमें क्या हो गया? वो x की value input कर दोगे pi over 4. When you input pi over 4 there, you'll get some value जो negative आ जाएगी और आप कहोगे this is a maximum point. Okay. So the equation of a curve is x cubed plus 2y cubed equals 3xy. We got this equation given for a curve. We have to show that dy over dx equals this thing. Derivative of y with respect to x find करना. Now, can we make y the subject here? We can't do that. Right? Y को subject नहीं बना सकते, so normal differentiation process यहाँ पे नहीं apply हो सकता. We will have to use implicit differentiation. Okay, so we've got x cubed plus 2y cubed equals 3xy. That's the curve that we have. We have to find dy over dx. So what we do is we start with this. We say let's differentiate with respect to x. Keep this in mind again. With respect to x differentiate कर रहे हैं. ठीक है, तो y 2y cube के derivative लेते हुए you have to be a bit careful there. Okay, x cube का derivative 3 multiply हो गया, x की power reduce होगी, x square हो गया, x का derivative फिर 1 ही होता है, 1 से multiply करें अपना के doesn't make any difference. Plus 2y cube, 2y cube power 2 से multiply हो जाएगी, 3 into 2 that becomes 6. Y की power में से 1 minus कर देंगे, so right now it's cube, 3 minus 1 is going to become square. And then we multiply by the derivative of y. Derivative of y क्या होता है? It's dy over dx, we multiply by that. Okay, on the right side we've got 3xy. How do you differentiate this then? It's a product rule लगेगा because we've got two things being multiplied, x और y multiply हो रहे हैं. So इस पे product rule apply करना पड़ेगा, right? 3 तो constant था, वो वैसे ही रहेगा. X, y के ऊपर let's apply the product rule. So keep the product rule in front of you. Y equals u into v होता है. dy over dx is uv dash plus vu dash. X into y. X को as it is रहने दें, वो आपका u है. I'm calling this u, this v. X as it is into derivative of y. Y के derivative dy over dx plus the derivative of x, which is 1 into y as it is, which is just y.
Any problems with this? So मैंने इसको उल्टा लिखना है अगर uv dash plus u dash v. So that's what I've done here. U as it is, x वैसे ही आ गया into derivative of y plus derivative of u which is x के derivative 1 होता है into v was y as it is यहाँ पर. अब इसको अलग अलग लिख के कर सकते हो. जैसे हमने प्रोडक्ट की एग्जांपल्स की थी. अब u अलग से लिख लो, v लिख लो, फिर u dash लिख लो, v dash लिख लो और उसको वहां पे इनपुट कर दो. So you can do it like that if you want the first few times. So in this case you could say u is x, v is y, u dash क्या होगा 1 हो जाएगा, v dash is going to be dy over dx. हम बस वो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं इसके अंदर. Is that okay? Now we need to make dy over dx the subject. वो हमारे पास वो फॉर्म आ जाएगी. फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. We have 3x square plus 6y square dy over dx equals 3x dy over dx plus 3y. अच्छा, लेकिन सिंप्लीफाई दिस 3 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को. अगर 3 सब में आ रहा है, 3 का फैक्टर, it's x square plus 2y square dy over dx equals x dy over dx plus y. This is what we have. अब dy over dx को सब्जेक्ट बनाएंगे. dy over dx वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं. That gives us 2y square minus x on the left side. On the right side we have y minus x square. And then dy over dx becomes y minus x square divided by 2y square minus x. और हमें वही शो करना था, ये हमारे पास आ गया. Any problems with this? So differentiate करके उसके बाद अपने dy over dx को सब्जेक्ट बना देना है. This is the form that we're getting at the end. अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि उसने शो करने के लिए ये कहा हुआ है y minus x square over 2y square minus x. So some of you who might have tried to do it yourself without looking at what I'm doing here, you might have got to this step at the end. X square minus y over x minus 2y square. Anybody who actually got it? Yes, Ariva got it. Sorry. Yeah, so you might end up with this at the end. लेकिन ये उसमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, ये शो करने के लिए कहा हुआ है. अगर आपको सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना होता, you could leave it like that and that will be okay. But in this case, you are required to show a specific form. तो उस form में आपने convert करना है. Now, how can you convert this thing to this thing? What you can do is, आप देखें, ये interchange हुआ है कि जो आपके पास expressions हैं, वो interchange हुआ है. आप क्या कर सकते हो? You can take minus common from the numerator. अगर numerator से minus common लेंगे, it becomes y minus x square. Right? And then you can multiply that negative sign with the denominator instead. तो नेगेटिव साइन जाके नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें. It becomes y minus x square over 2y square minus x. We can't do it with numbers, but this is just minus 1, right? So essentially हम कर यहाँ पे कर ये रहे हैं. We are basically so we are basically multiplying with minus 1 and dividing by minus 1. हम ये कर रहे हैं. So common लेके नीचे multiply करने का मतलब ये है कि this is what we're doing, multiplying with minus 1 and dividing by minus 1. Yeah, you can actually do that. So if that's simpler, you can
do it like this. You can say कि अच्छा multiply कर दें numerator और denominator को -1 के साथ, तो you get this. Okay. So in general, just remember, अगर आपके पास a minus b over c minus d है, that's the same thing as b minus a over d minus c. दोनों का आप interchange करके इस तरह से लग सकते हैं. Okay. So in this case, you'll have to do it at the end. अगर आपके पास ये form आ रही थी, तो आपको उसमें convert करना पड़ेगा. ठीक है, वो convert करने के लिए again ये person इसमें show करने के लिए कहा हुआ है. You'll have to write it like this कि ये step आपको show करना पड़ेगा कि इस form से आप इस form में कैसे जा रहे हो. Right? Otherwise आपको उसके marks पूरे नहीं मिलेंगे because आपने show करना है कि आपके पास ये form आती है, तो you have to show every single step कि किस तरह से आप उस point पे पहुंच रहे हो. So this is how you would do it then. You'll multiply by -1 and also divide by -1 and you'll get to that form. कह रहे सबको? ठीक है, इसका second part आप देख लें. इसमें क्या है, find the coordinates of the point other than the origin where the curve has a tangent which is parallel to the x-axis. What does that mean? Take a minute to just read that statement. Gradient is 0, or you can say a stationary point here. So we are looking for the point. We're looking for the point where the curve has a tangent which is parallel to the x-axis. Parallel to x-axis का क्या मतलब होता है? Horizontal. Horizontal line है. Horizontal line का gradient क्या होता है? 0 होता है. अगर gradient 0 से क्या मतलब है? dy over dx is also 0. So parallel to x-axis means horizontal line है. Horizontal line का मतलब है derivative is equal to 0. उस point के ऊपर जहाँ पे tangent बन रहा है. जो tangent है वो horizontal है, तो उस point के ऊपर आपका gradient 0 आएगा, derivative 0. So what we're going to do here in the second part is, we'll say let's put dy over dx equal to 0. आपके पास first उससे एक derivative आ गया, उसको आपने equal to 0 input कर देना है. Y minus x square over 2y square minus x equals 0. And that gives you y minus x square equals 0. Y equals x square. तो derivative को 0 से equate करके हमारे पास ये आ गया. What do we do now? उसने कहा था coordinate find करने आपने stationary point के. So we have something in terms of x and y. X और y के terms में हमारे पास एक relationship आ गया. Derivative को 0 से equate करने के बाद. We also have another relationship between x and y, क्योंकि उसने कहा उस point के coordinate find करने हैं जिस पे tangent x axis के parallel है, तो वो point कहाँ पे lie करता है? वो point इस curve के ऊपर lie करता है. उस curve के ऊपर lie करता है ना point. So we have another relationship between x and y from here, which is this equation of the curve. So we have x cubed plus 2y cubed equals 3xy. ये आपके पास एक और equation है. So you got one equation here, another equation here. इनको simultaneously solve कर लेंगे. आपके पास x और y की values आ जाएंगी जो आपको चाहिए. ठीक है? You can try doing this. Simultaneously solve कैसे करेंगे? You just input this thing there. इसको जाके वहाँ पे input कर दें. Put y equals x square. You get an equation. You can solve that. You get values of x. इसको y में input कर दें. Corresponding y भी आ जाए. ठीक है? So try doing this. Okay. We have to find dy over dx in each of these cases. We've got 2 points here. ln of 1 plus sine 2x is your function. Y equals this. We need to find dy over dx. ln का डेरिवेटिव क्या होता है? ln x का 1 over x. Okay. Sine का क्या होता है? Cos x. Okay. What's the outer function? ln. Log बाहर लगा हुआ है, right? तो पहले log का रूल अप्लाई होगा. 1 over 1 plus sine 2x. तो x की जगह पे जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा नीचे डिनोमिनेटर में चला गया. ओके?
But then what you have to do is you've got to multiply by the derivative of this thing. इसके derivative से multiply करेंगे. One plus sin 2x का derivative. 1 का derivative 0. You can just leave that. Sin 2x का derivative cos 2x, but that's not complete yet. 2x का derivative 2 उससे multiply करेंगे. With this, now we can simplify this if we want. It becomes 2 cos 2x divided by 1 plus sin 2x. Is that all right? So that's the derivative of this first part. Let's do the second part. Y equals tan x over x. So we've got y equals tan x over x. This is a fraction. We'll have to apply the quotient rule. Quotient rule क्या होता है? U over v becomes, लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, minus uv dash divided by v square. ठीक है? अच्छा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? Secant square x. Okay. Now let's differentiate this. dy over dx, we are saying this is u and this is v. V as it is, which is x as it is आ गया, into u dash tan x का derivative, which is secant square x, minus u as it is, which is tan x, into derivative of x, which is 1, divided by divided by x square. That's your derivative. बस आप इसना छोड़ दें. Sorry? Can we write this thing as secant square x square? ये x और ये x multiply कर दें. Secant square x के ऊपर apply हो रहा है. It's not being multiplied. Secant square एक function है जो x के ऊपर apply हो रहा है. ये वाला x उसके बाहर है. उस तरह नहीं कर सकता. From the worksheet, let's look at this. We have the equation of a curve, and that's given like this: square root of x plus square root of y equals square root of a, where a is a positive constant. So second, find dy over dx in terms of x and y. Do we have y the subject? We can make it, so that's possible. But if you do make y the subject, तो जो आपके डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ x की टर्म्स में आएगा. We want it to be in terms of both x and y. अगर आप y को सब्जेक्ट बना दोगे तो वहां पे जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ x की टर्म्स में आएगा. जब आपका y सब्जेक्ट नहीं बना हुआ, आपने उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना. ओके? उसने कहा x and y. It's not x or y. And y का मतलब है you should have x in that and also y in that. दोनों नहीं. No, it is the subject. That will be correct. That will be the correct form of the derivative. लेकिन जो उसने मांगे वो नहीं है. वो एक और different form होगी. वो भी सही होएगा. उसकी वैल्यू सही होंगी. लेकिन उसने वो आपसे शो करने के लिए नहीं कहा. उसने कहा x और y दोनों की तरफ से चाहिए आपको. x raised to power 1 over 2 plus y raised to power 1 over 2 that equals a raised to power 1 over 2. हमें क्या करना है? हमें dy over dx फाइंड करना है. Keep in mind, a is a positive constant. a एक constant है. a is not some variable. a एक number है कोई. इसका 3, 2 कोई number है उस तरह से, right? अच्छा. How do we differentiate it? Implicit differentiation. x raised to power 1 over 2 का derivative हम यहाँ पे लिख लेते हैं. जरूरी नहीं है लिखना, but it's just to keep this in mind consciously कि हम जो differentiate कर रहे हैं, हम
with respect to x कर रहे हैं. 45. क्यों? उसने यहाँ पे क्या कहा? dy with dx. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? In terms of x and y. मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें x और y दोनों आ रहे होंगे, राइट? ओके. Differentiate with respect to x. X raised to power 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x raised to power -1/2. और फिर हम क्या कर सकते हैं? x का डेरिवेटिव that's just 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? प्लस y raised to power 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 y raised to power -1/2 multiplied by the derivative of y, which is dy over dx. So we've got dy over dx here. That equals a raised to power 1/2. A raised to power 1/2 का derivative. A raised to power 1/2 का derivative. A is a constant, तो a raised to power 1/2 भी constant है. Constant का derivative क्या होता है? It's 0. So you've got 0 on the other side. Yes. With respect to x, this is in terms of x and y. Those are the two different things. In terms of x and y का मतलब है जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें x और y दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए. That means x is the variable with respect to which you are differentiating. मतलब जब आप x को differentiate कर रहे हैं, saying dx over dx. जब आप y को differentiate कर रहे हैं, that's dy over dx. Right? Okay. So we have differentiated both sides with respect to x. Now what we do is, हो सकता है, but implicit differentiation के अंदर they generally don't give you something other than x and y. Generally नहीं होता है. जो भी दिया होगा, जो डिनोमिनेटर में होएगा, आपने उसके विद रिस्पेक्ट करना है. बता, अगर कांस्टेंट है फिर, यस, अगर कांस्टेंट, अगर उस यहाँ में बताया ना उसने ये कांस्टेंट है इसलिए. अच्छा, ओके, लेट्स कंप्लीट दिस. सो वी हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ वी नीड टू मेक dy over dx द सब्जेक्ट, राइट? बिकॉज़ हमें dy over dx फाइंड करना था, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं. dy over dx वाले टर्म्स को एक साइड पर रख लें, टेक एवरीथिंग एल्स टू द अदर साइड. Okay, so you have 1/2 y raised to power -1/2 into dy over dx. That equals 1/2 x raised to power -1/2. ठीक है? अब इसको उधर ले जाए, राइट? Minus, yes. So you've got a negative sign here. Yeah. अच्छा. अभी जो माइनस पावर्स है इनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं. If we want, we can take that to the denominator. We can say this is 2y raised to power 1/2. And here we've got 1/2 x raised to power 1/2. Does that make sense? बस पावर्स को पॉजिटिव कर दिया, तो वो अगर ऊपर थे तो नीचे चले गए वो. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, टेक दिस टू द अदर साइड, बिकॉज हमें dy with dx सब्जेक्ट चाहिए. We get dy with dx equals -2y raised to power 1/2 divided by 2x raised to power 1/2. 2 and 2 get cancelled, and we're left with -y over x whole raised to power 1/2 लिखते हैं, अलग अलग 1/2 लिखते हैं, it's the same thing, या square root लिखते हैं. That's what you get. That's dy over dx. ये आपको फाइंड करना था. Okay, so there's a straight line with this equation, y equals x. This intersects the curve at the point P. Find the equation of the tangent to the curve at P. Tangent की equation कैसे निकलता? Need the gradient and a point. Gradient है हमारे पास. dy over dx है, इसके अंदर y और x की वैल्यूज अगर इनपुट कर दें, ग्रेडियंट आ जाएगा. But what values of x and y? उसने क्या है? Find the equation of the tangent to the curve at P. P point क्या है? P is the point
at which this line intersects this curve. All right. So आप क्या करेंगे सबसे पहले? उसने कहा है y equals x intersects the curve at the point P. तो पहले आपको P find करना है. How are you going to find P? P is the point of intersection of these two graphs. तो इनको simultaneously solve कर लेंगे. आपके पास P point आ जाएगा. Okay, so that's what we start from. We've got square root of x plus square root of y equals square root of a. And the second equation is y equals x. So इसमें क्या करते हैं? We put y equals x. इसमें input कर दें. We get square root of x plus square root of x equals square root of a. That is 2 square root of x equals square root of a. Square root of x equals square root of a over 2. X equals a over 4. Is that okay? ये आपके पास x coordinate आ गया. अगर ये x coordinate है तो y coordinate क्या आएगा? That's also the same because y equals x है तो y is also a over 4. The point P is a over 4 and a over 4. These are the coordinates of this point. A over 4 and a over 4. Okay. So we got the point P. अब इस point के ऊपर equation of tangent निकाल लेंगे. How are we going to find that? Put this in the derivative. Put this point P in dy over dx. उसमें जाके input कर दें. dy over dx equals minus y over x का whole square root minus a over 4 divided by a over 4 square root of this. अंदर cancel हो गया सब कुछ. minus 1 का square root which is just minus 1. So the derivative is minus 1. This is the gradient. Okay, so we've got the derivative, we've got the gradient, we've got the point. हमें क्या करना था? हमें equation of tangent निकालनी है. बस उसकी फॉर्म आपको पता है क्या होती है? y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus a over 4 equals minus 1 into x minus a over 4. You can just leave it like this and that's okay. Number 25 from the worksheet. We have the equation of a curve and that equation is ln of xy. Anaya, ln of xy minus y cube equals 1. This is the equation of this curve. We need to show that the derivative dy over dx is equal to this. Yes. Now again, y is not the subject. So what do? We use implicit differentiation. ln का derivative क्या होता है? 1 over x. साथ हो सकते हैं क्या मतलब? Product rule भी लग सकता है और as Ayuba is suggesting we will actually break it down, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा. फाइव तो वैसे ही रहेगा ना, जो कांस्टेंट है that does not change, जो मल्टीप्लाई होता है वो भी कर सकते हैं, उस तरह करके भी कर सकते हैं. दोनों इक्विवेलेंट होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे. ओके, अच्छा ln of xy minus y cube equals 1. ये हमारे पास इक्वेशन थी. हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. We could do it directly if we wanted, या log rule अप्लाई करके कर सकते हैं. Your choice. इस तरह कर लेंगे आसान हो जाएगा. But let's say you don't realize कि अच्छा log rule यूज कर सकते हैं. Let's do it directly. Okay. अब क्या करेंगे? Log of xy के डेरिवेटिव क्या होगा? 1 over xy multiplied by the derivative of xy. xy का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे x और y दो एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
we will have to apply the product rule here. Okay, 1 over xy, अब xy के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, x को u कंसिडर कर लें, y को v कंसिडर कर लें, x as it is, y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 dy over dx प्लस u का डेरिवेटिव which is 1, x का डेरिवेटिव 1 है, into y as it is, यानी v जो है वो वैसे रहा है 1 into y. Does that make sense to everyone? Yes. So that's the product rule for the first term. ये हमारा ये हो गया, ये वाला point. Now we've got y cube. Y cube again, it's a power. 3 नीचे आके multiply हो जाएगा, power में से 1 minus कर दिया. And then जो power के अंदर था नीचे, उसके derivative से multiply करेंगे. Y का derivative क्या है? It's dy over dx. On the other side, we've got 1. 1 का derivative क्या होता है? It's 0. 1 is a constant derivative 0 आ जाएगा. So we have done the differentiation part now. अब हमें dy over dx को subject बनाना है. ठीक है, उसको subject बना लेते हैं. We'll have to simplify this first. So we get x over xy into dy over dx plus y over xy minus 3y square over dx equals 0. Okay? अच्छा, अब हमें हमारे पास क्या आ गया? We've got 1 over y dy over dx plus 1 over x minus 3y square over dy over dx into dy over dx equals 0. Any problem with this? Okay, now what we can do is we can take dy over dx common. dy over dx वाली टर्म्स में से उसको कॉमन ले लें और 1 over x को दूसरी साइड पे ले जाएं. So we have dy over dx common from these two terms, this term and this term. That gives us 1 over y minus 3y square. On the other side, we've got minus 1 over x, right? ये dy over dx आ गया. अब हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है. So we take this thing to the other side. लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? आप देखिए आपको क्या चाहिए. आपने शो क्या करना है? आपने ये चीज शो करनी है. इसमें क्या आ रहा है आपके पास? इसमें आपके पास y cube भी आ रहा है. Do we have a cube here? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? LCM ले सकते हैं पहले. LCM ले लेंगे. That is going to make it simpler. 1 over x को तो मैं राइट साइड पे ले गया. अच्छा, इसको LCM ले लें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 minus 3y cube over y, and that equals minus 1 over x. Let's multiply this thing on the other side now. dy over dx equals minus y over x into 1 minus 3y cube. This is what we're getting. अगर उसने आपसे सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा होता, you could just stop at this point and this would be dy over dx. At this point, we would not go any further. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको कुछ शो करने के लिए कहा हुआ है. उसने कहा ये शो करना. Now, what is that expression? That expression is y over x into 3y cube minus 1. अब इसमें क्या डिफरेंट है? एक तो ये माइनस नहीं आ रहा और दूसरा ये चीज इंटरचेंज हुई भी है. तो हमें सिर्फ क्या करना है? इस माइनस को जाके इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देना. कहीं भी कर सकते हैं ना, हमें वो चीज ऊपर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उसने ये शो करने के लिए कहा है ये फॉर्म चाहिए आपको, ये वाली फॉर्म चाहिए. देखिए माइनस साइन है ना सर, माइनस साइन. तो आप अगर आपके पास -2/3 है, लेट्स से
You can write it as minus 2 over 3, or you can write it as 2 over minus 3. They're both the same. Denominator में minus लिख दें, numerator में लिख दें. It doesn't make any difference. Okay? Yes. नहीं, न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, दोनों कर सकते हैं. अच्छा, let me save you from this confusion. आप ये कर लें, आप इसका सोच लें. माइनस आपके पास ऊपर है, लेट्स से, ठीक है, माइनस y इज देयर. डिनोमिनेटर में से जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस कॉमन ले लें. डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन ले लें. ओके, कैन वी डू दैट? फ्रैक जो नीचे, जो एक दफा सुन लिया करें, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस 3y क्यूब आ रहा है. इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलता है? 3y cube minus 1. Now this -1 and -1, they get cancelled, and we are left with y over x into 3y cube minus 1. That's dy over dx. अच्छा प्लीज एक मिनट. सेकेंड पॉइंट में उसने कहा है find the coordinates of the point where the tangent to the curve is parallel to the y-axis. Tangent is parallel to y-axis, इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर जो tangent है वो vertical है. Parallel to y-axis का मतलब है vertical है. यानी कि जो gradient है dy over dx, gradient is undefined. Gradient आपका यहां पे undefined होएगा. 20 पे -4 इसी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए होता है, और कहीं भी नहीं होता. This is not quadratic, right? अच्छा, gradient undefined है because the curve is parallel to y-axis, right? Gradient is undefined. Gradient undefined का मतलब क्या है? Undefined gradient कैसे आता है आपके पास? dy over dx जो होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा, इसका डिनोमिनेटर में इसके क्या होगा? 0 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो न्यूमरेटर में 0 होता. क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर 0 होएगा. तो आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को 0 कर देना है. x into 3y cube minus 1 equals 0. That's what you're going to do in the second part. अच्छा, so we have dy over dx. And we know that the gradient is supposed to be undefined. तो हम क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दें. ठीक है? x into 3y cube minus 1 equals 0. अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता, अगर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता, फिर अगर ग्रेडियंट 0 होता फिर क्या करता है? अगर ग्रेडियंट 0 होता फिर क्या करता है? फिर न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर देता. राइट? इफ इट वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन तो फिर न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं. इफ इट्स अ वर्टिकल लाइन वी इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0. We just write it down if you just want to remember this like that. Parallel to x axis, तो क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लाइन जब ये होगा आपके पास तो dy over dx को आपने 0 से इक्वेट कर देना है, यानी न्यूमरेटर का 0 से इक्वेट हो जाएगा. When you have parallel to y-axis, it's a vertical line. तो आप क्या करोगे? Denominator of dy over dx, you'll put this thing equal to 0. ठीक है? x एक्सिस के पैरेलल में सिंपली डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देंगे, y एक्सिस के पैरेलल में उसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देंगे. ठीक है? So you'll see these coming up again and again in the past papers, so you should sort of, if you don't
understand it very clearly, just memorize this. Okay, y-axis वाला in particular, denominator को 0 से equate करना. Okay. Okay. So now we've got this equation. We've got two unknowns and one equation. Can we solve an equation like this? दो unknowns हो और एक equation हो. Generally हम क्या करते हैं? हमारे पास दो इस तरह के equations होती हैं. But here, if we break it down, हमारे पास क्या आ गया? एक तो x equals 0 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? 3y cube minus 1 equals 0. So we have one value here for x. अब इसकी corresponding value y हमें नहीं पता अभी. And another possibility is we have y cube equals 1 over 3. And then that's going to give you y equal to something. We don't need exact values, so हम इसको decimals में convert कर सकते हैं. Can anyone tell me y की value क्या आती है? Cube root of 1 over 3. 0.69693. 0.693 and then 4 decimals बताएं मुझे. Okay. 6934. Working may always take 4 significant figures at least. At least 4 significant figures. 4 से कम नहीं करना. Okay? So that's the value of y that we've got. We've got x equals 0 and we've got y equals 0.6934. Now, does that give us this point 0 and 0.6934? Is that the point we're looking for? No, why not? X is not 0. How do we know x cannot be 0? We are looking for, yeah, it's parallel to y-axis, but it can still be y-axis. मतलब उससे आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे हो. But अच्छा, let's say आपके पास ये आ जाता x equals 1. Then would you say it's 1 and this? We can say that. अच्छा देखें, जब आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, you basically say you have this or this. Either this or this. ये इक्वेशन को सॉल्व करें ना, it's not necessary that both of them are happening at the same time. You're saying either x equals 0 or 3y cube minus 1 equals 0. दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, but you're not sure at this point. इन दोनों x की वैल्यूज, एक x की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, एक y की वैल्यू ये आ रही है. इनकी जो corresponding वैल्यूज है आपको किसी और इक्वेशन से मिलेंगी. एक इक्वेशन से आप दो अननोन्स नहीं फाइंड कर सकते. एक वैल्यू ऑफ x आपके पास आ रही है, एक वैल्यू ऑफ y आ रही है. दे आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. मतलब x इक्वल 0 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये y की नहीं है. The point that we are looking for, that point lies on the curve. वो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ना. तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, x into 3y cube minus 1 equals 0. This is one equation that the x coordinate and y coordinate of that point satisfy. The other equation that they must satisfy is the equation of the curve. वो कर्व के ऊपर भी तो लाई करते हैं ना. तो हमें बेसिकली करना क्या है, जो इक्वेशन हमने फाइंड की है और जो आपकी कर्व की इक्वेशन है, यू हैव टू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली. क्योंकि वो कर्व के ऊपर भी पॉइंट लाई करता है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है जो आपके डेरिवेटिव की कंडीशन है. सो द कर्व्स इक्वेशन वाज ln xy minus y cube equals 1. That's the equation of the curve that we've got. What you're going to do now is you're going to put these values in that equation. एक आपके पास x की वैल्यू आ रही है, x equals 0,
वो इस पे इनपुट करेंगे, एक आपके पास y की वैल्यू आ रही है, वो इनपुट करेंगे, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दूसरे कोऑर्डिनेट की फाइंड करेंगे. यस Yes, so let's do that. So if we were to put these values in this equation, इसमें हम one by one दोनों input करते हैं. Let's input x equals 0 here. Let's input y equal to 0.6934. When we input x equals 0 here, you see what happens. ln of 0 minus y cube equals 1. Now, ln of 0 is undefined. ln 0 की तो कोई value नहीं होती. If you put this on your calculator, you'll get an error. So you don't get anything from this. ये possible ही नहीं है. x equals 0 के ऊपर उस curve के ऊपर कोई point है ही नहीं. x equals 0 के ऊपर वो curve ही undefined. Right? Because जब x equals 0 input करते हो, आपके पास log के अंदर 0 आ जाता है. Log के अंदर 0 आ जाता है. So ln 0, x की value 0 के ऊपर, you don't get any corresponding value for y. Is that okay? x equals 0 पे कोई value y नहीं मिल रही हमें. y equals 0.6934 input करते हैं. 0.6934 into x minus 0.6934 cube equals 1. Now we can try to find the value of x from here. What do we get? We have ln of 0.6934 x. What do we get on the other side? जब ये चीज राइट पे जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 plus 1 over 3, which is 1.333. That's what we get. And now we've got log here. Log को खत्म करना है तो क्या करेंगे? The base is e. Base goes to the other side and becomes the base of 1.333. And that gives you 0.6934 x equals e raised to power 1.333. Now you can solve this on your calculator. E raised to power 1.333 divided by 0.6934. And that's going to give you a value of x. 5.47. ये x की value आ गई. Now this is the point that we were looking for. X equals 5.47 and y equals 0.6934. But now this is our final answer. उसने question के अंदर ये instruction दी हुई है. You have to give your answer to 3 significant figures. जब भी question statement के अंदर कोई instruction होती है ऐसी, you have to follow that. Otherwise you lose 1 mark. 3 significant figures तक answers देने हैं आपने. So one is 5.47 and the y coordinate therefore is 0.693. This is the point that we were looking for. Okay, so we've got parametric equations of a curve. Parametric equations, दो अलग-अलग equations हैं. They're defined in terms of a third variable, which is t. We have to show that dy over dx equals this thing. So we have x equals e raised to power minus t into cos t, and we have y equals e raised to power minus t sin t. The two equations आपके पास हैं. How do you find dy over dx from this? What do we have to do here? Find the derivative for each of these equations separately and then use chain rule. Right? So parametric differentiation process is pretty straightforward. आप दोनों का अलग-अलग differentiate कर लें. dx over dt. Let's differentiate this. It's a product, so you'll have to use the chain rule. This is u, this is v. U as it is into derivative of v. I can write that here as well. U v dash plus u dash v. That's what we're going to do. U as it is into derivative of v, which is
माइनस साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी, विच इज e raised to power minus t multiplied by -1, power के derivative, that's -1, उससे multiply करेंगे, and then cos t as it is, so we've got this. So dx over dt हमारे पास क्या आ गया? This is minus e raised to power minus t sin t minus e raised to power minus t cos t. This is dx over dt. Is that okay? Any problems? Let's do the other one. dy over dt. This is again a product. So we say this is u and this is v, and we have to use the product rule again, that is uv dash plus u dash v. U as it is, e raised to power minus t as it is, into derivative of v, sin t के derivative is cos t, plus derivative of e raised to power minus t, which is e raised to power minus t, into the derivative of the power, which is -1, and then v as it is, which is sin t. If we simplify this, we get e raised to power minus t cos t minus e raised to power minus t sin t. So we found the derivatives of each of those functions separately. ठीक है, अलग-अलग हमने differentiate कर लिया दोनों को. Now what we have to find here is dy over dx. dy over dx find करना है. What do we do for that? dy over dx. We use the chain rule, dy over something multiplied by something over dx. Right? That's how the chain rule works. दरम्यान में आपके पास यहाँ पे जो third जो भी variable होगा वो आ जाएगा. And the third thing here is t. So you got dt here. dy over dt into dt over dx. इसमें values input कर देंगे. We will get dy over dx. Okay. What's dy over dt? E raised to power minus t into cos t minus e raised to power minus t into sin t. That is dy over dt. Multiplied by dt over dx. That's going to be reciprocal of this thing. इसका reciprocal ले लें. That's going to be 1 over e raised to power or minus e raised to power minus t, sin t, minus e raised to power minus t, cos t. This is what we have. Okay. Now what you can do is you can simplify this. You can take e raised to power minus t common from both the numerator and the denominator. If we do that, we have e raised to power minus t into cos t minus sin t in the numerator and in the denominator. If we take e raised to power minus t common here as well, we have so minus e raised to minus t common ले लें, we end up with sin t plus cos t. E raised to power minus t and e raised to power minus t, they get cancelled, and we're left with cos t minus sin t divided by minus into sin t plus cos t. This is dy over dx. Differentiation वाला process यहाँ पे खत्म हो गया. हमारे पास एक डेरिवेटिव तो आ गया, राइट? इसके बाद डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं, हमने वो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया, चेन रूल यूज कर लिया. दिस इज द करेक्ट डेरिवेटिव. ओके, अगर उसे सिर्फ dy over dx इवैल्यूएट करने के लिए कहा होता, we could just leave it at this point. यहाँ पे छोड़ सकते थे, and that will be the result. But in this question उसने क्या कहा है? उसने कहा है show that dy over dx equals this thing. तो आपको ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ऑलराइट, इस फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है. We have sin and cos, और जो ऊपर फॉर्म है वहां पे tan है और वो कंपाउंड एंगल है उसका. So we have to somehow figure out a way कि इन दोनों को इक्विवेलेंट शो कर दें, इन दोनों चीजों को. ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है that this is tan of t minus pi over 4. ये हमें ये प्रूव करना है. Now there is a relatively simpler way of doing this and a relatively harder way of doing this. Remember, जब हमने कंपाउंड एंगल्स डिस्कस किए थे,
we said कि कंपाउंड एंगल से एक्सपैंड करके सिंगल एंगल में जाना इज इजियर as compared to going the other way around, और ये single angles को compound angle में convert करना, that's going to be relatively more difficult. At this point, the problem is just about showing or proving कि जो हमारे पास derivative आ रहे हैं और जो उसने derivative दिया हुआ है, they are equivalent. हमने derivative तो find कर लिया है ना, हमें इस पॉइंट पे अब सिर्फ ये शो करना है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव हमने निकाला डेरिवेटिव दैट इज द सेम एज द डेरिवेटिव दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन. इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन एक्चुअली गो द अदर वे अराउंड. वी कैन से कि अच्छा ये उसने डेरिवेटिव दिया हुआ है, हम इसको प्रूव कर देते हैं कि ये इसके इक्वल है. डज दैट मेक सेंस? एंड दैट्स गोइंग टू बी इजियर क्योंकि वो कंपाउंड एंगल है, उसको एक्सपैंड करेंगे, उसको हम किसी तरह से इस फॉर्म में शो कर देंगे. ठीक है? So that's what we're going to try and do here now. So you can think of it as an identity. कि आप एक identity prove कर रहे हो. एक साइड पर आपके पास tan of t minus pi over 4 है और दूसरी साइड पे आपके पास है cos t minus sin t over minus into sin t plus cos t. इन दोनों को आपने equivalent show करना है, ये आपने prove करना है. अगर ये प्रूव हो जाएगा तो आपको वो शो हो जाएगा उसने कहा हुआ था. सो वी एक्सपैंड दिस लेफ्ट साइड नाउ. इसके लिए आपको वो कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी tan की. लेट मी राइट दैट हियर ऑन द साइड. tan of a minus b, what was that equal to? tan of a, आप फॉर्मूला शीट से देख सकते हैं, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. That's the identity that we have for compound angle of tan. ये फॉर्मूला शीट में दी होती है. ठीक है? Now let's expand this. हम कहेंगे ये a है हमारा और ये b है. So tan of a, which is t, minus tan of b, which is tan of pi over 4, divided by 1 plus tan t into tan pi over 4. Now what's tan pi over 4? Tan pi over 4 क्या होता है? Tan pi over 4 क्या होता है? It's 1. Pi over 4 45 degrees होता है. So tan pi over 4 is basically 1. This becomes tan t minus 1 divided by 1 plus tan t. ठीक है? अब हमारे पास ये tan की फॉर्म में है. We want something in terms of sin and cos. तो tan को कन्वर्ट कर लें sin over cos में. It becomes sin t over cos t minus 1 divided by 1 plus sin t over cos t. And then that becomes, if you take the LCM, it becomes sin t minus cos t divided by cos t whole divided by cos t plus sin t divided by cos t. Is everyone okay with this? मैंने LCM ले लिया है न्यूमरेटर में. So this is the numerator and this is the numerator here. उसमें LCM ले लिया और डिनोमिनेटर का अलग से LCM ले लिया. We get this thing. ठीक है? Now we can do the cancellation. ये cos t और ये cos t cancel हो गए. What are we left with? We're left with sin t minus cos t divided by cos t plus sin t. Is everyone okay until this step? Now, what did we have to show? We had to show this equivalent to this. What can we do now? Yes? We can multiply with -1, both the numerator and the denominator. Yeah, हम यहाँ पे multiply कर दिया, right side को simplify कर लें. It's the same thing. You can say this is sin t. यहीं पे इसी step में कर लेते हैं. We can multiply the numerator and the denominator with -1. And that gives you
cos t minus sin t divided by minus cos t plus sin t, and that is equal to the right hand side. So हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया कि जो dy over dx है, that was what we found was cos t minus sin t divided by minus cos t plus sin t. That's the same thing as saying tan of t minus pi over 4. हमने वो शो कर दिया. Is that clear to everyone? You could do it the other way around, but that's going to be quite complicated. दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको as it is लेकर चलते, इसको as it is लेकर चलते, जो ये वाली एक्सप्रेशन है, और इसको किसी तरह से tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, उसको कंपाउंड एंगल बनाते. उसमें फिर आपको एक दो ट्रिक्स यूज करने पड़ते. एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 को आप tan pi over 4 लिख सकते हो. जिस तरह लॉग्स में होता था ना, लॉग्स में 1 की जगह पे हम अक्सर ln e लिख देते थे बिकॉज दे वर इक्विवेलेंट. कुछ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ln e लिख देते होते थे. tan pi over 4 की वैल्यू 1 होती है. तो इसमें कन्वर्जन करते हुए अगर हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं, हमें कुछ जगह पे 1 की जगह पे tan pi over 4 लिखना पड़ता, और फिर हम कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी लगाते हैं. वेयर डू यू गेट दिस आइडिया? बिकॉज यहाँ पे pi over 4 आ रहा था, जो हमारे पास फॉर्म फाइनल है, उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम tan pi over 4 करते हैं. बट दैट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. आई वुड रिकमेंड यू डू इट दिस वे. आपने जब डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, यहाँ तक तो प्रोसेस काफी आसान, डेरिवेटिव फाइंड करने तक, साइन और कॉस की टर्म्स के अंदर. उसके बाद आपने प्रूव करना है कि जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है, that derivative is the same as what is given here in the question. तो आप उसको as an identity treat कर लो कि आप ये prove कर दो कि अच्छा those two things are equivalent. Okay, so we have this diagram that shows the equation that shows the curve with this equation, where a is a positive constant. A जो है वो constant है, keep that in mind. The maximum point on the curve is m. You can see that here. Find the x coordinate of m in terms of a. Maximum point find karna. How do you find maximum point of a curve? You find the derivative. We put that equal to 0, right? Now, how do you find the derivative in this curve? Y subject नहीं है, तो क्या करेंगे? Implicit differentiation use करेंगे. We have x cube plus xy square plus ay square minus 3ax square equals 0. That's the equation. We want to differentiate this. पूरी equation को differentiate कर दें with respect to x. Okay. What's the derivative of x cube? It's 3x square. xy square is a product. इसको हमें प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा. X as it is and the derivative of y. What's the derivative of y? 2y into dy over dx. And then the derivative of x, which is 1, y square as it is. This is the derivative of xy square. ठीक है, उसका derivative हो गया. Okay. Plus ay square. What about the derivative of ay square? इस पे product rule कैसे apply करेंगे? A is a constant. A is a constant. So it's like saying 2y square, for example. 2y square constant पे तो product rule नहीं apply करते ना. हम इसको क्या करते हैं? 2 as it is. जो constant होता है वो वैसे ही रहता है, और बस इसको differentiate कर लो. So in this case as well, A is just a constant. A remains as it is. It does not change. Y square को differentiate कर लें. That's 2y into dy over dx.
minus 3ax square. Again 3a is constant, वो वैसे ही रहेगा. X square का derivative, it's 2x, and that equals 0. And now we just simplify this. We get 3x square plus 2xy dy over dx plus y square plus 2ay dy over dx minus 6ax equals 0. We need to make dy over dx the subject. So we take dy over dx common from the terms that included. And we have 2xy plus 2ay here. एक ये आ गया और एक ये आ गया. Take everything else to the other side. And that gives us 6ax from this. And then minus 3x square minus y square. And now dy over dx is equal to 6ax minus 3x square minus y square divided by 2xy plus 2ay. You put dy over dx equal to 0. Because आपको maximum point चाहिए. Denominator तो खत्म हो जाएगा. We are left with 6ax minus 3x square minus y square. Any problems with this? यहाँ तक clear है सबको? We just find the derivative, put that equal to 0. We end up with this thing. Now the coordinates of m should satisfy this equation. The coordinates of m should satisfy this equation because यहाँ पे derivative 0 के equal है. But ये दो variables हैं x और y. एक equation से दो variables के values से नहीं निकाल सकते हम. Do we have another equation for x and y? We've got the original curve here. उसको भी satisfy करते हैं. ये दो equations हैं, इनको simultaneously solve कर लेंगे. So we have 6ax minus 3x square minus y square. This is equation 1. The other is that equation of the curve x cubed plus xy square plus ay square minus 3a x square. That equals 0. This is the second equation. ये दो equations आ गई. इसमें से x और y की values find कर लेंगे. We have to solve them simultaneously. How do we solve them simultaneously? We can make one of the variables the subject, या y को subject बना लें, या x को subject बना लें. Left वाली equation से, it's not even an equation, इसको 0 होना चाहिए यहाँ पर, equal to 0. Yes. So both equal to 0, and it is equation. Okay. So that's a good point. They're both equal to 0. Can't you just equate them? 6ax minus 3x square minus y square equals x cubed plus xy square plus ay square minus 3x square, right? Which is correct, but not helpful. What do we do after this? X भी आ रहा है इसमें, y भी आ रहा है, अब क्या करें इसको? We still can't solve this. Variable eliminate करना होता है ना, eliminate तो वो ही नहीं कुछ यहाँ पे. Can't we see that the constant 6ax is equal to ay square minus 3ax, so that the only two numbers or variables that have the variable a in them? No, you can't say that. Yes, so we make y the subject from one of these equations. Left वाली equation से आसान है. इसमें अगर y को subject बना ले, y square equals 6ax minus 3x square. In fact, यहाँ पे y find करने की भी जरूरत नहीं है आपको, because देखिए दूसरी equation के अंदर आपके पास y नहीं है, सिर्फ y square है. तो आप इसको as it is वहाँ पे जाके input कर दें. बजाय इसके कि पहले square root लें, वहाँ पे जाके फिर दोबारा से square करें. You just put it like that. You can say, let's input y square equals 6ax minus 3x square into this. Y square की जगह ये डालो. The purpose is to eliminate one of the variables. इससे y eliminate हो जाएगा. And now this gives us x cubed plus x into 6ax minus 3x square
plus a into 6ax minus 3x square minus 3ax square equals 0. That's the equation that we get. And now we have to solve this. We simplify this, and it gives us x cubed plus 6ax square minus 3x cubed plus 6a square x minus 3ax square minus 3ax square equals 0. 6ax square minus 3x square minus 3x square, they all get cancelled out. X 6 minus 3 was 0 ho gaya. You're left with x cubed minus 3x cubed, which is minus 2x cubed, and plus 6a square x equals 0. इन दोनों को ऐड कर लिया और ये तीनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गए. We can take x common here, and that gives us minus 2x square plus 6a square equals 0. Either x equals 0 or minus 2x plus a square, 2x square plus a square equals 0. यहाँ से हमारे पास आ गया 2x square equals 6a square, x square equals 3a square, and then x equals plus minus square root of 3a square. और फिर a का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a बन जाएगा. We have square root of 3 and a outside the square root. This is what we get. X की तीन वैल्यूज आ रही है हमारे पास. X is either 0 or plus square root of 3 times a or minus square root of 3 times a. अब हम जाते हैं ऊपर देखते हैं. M का x coordinate can it be 0? It can't be 0 on the graph. It can't be negative. It has to be positive. So we say 0 is not possible. ये तो नहीं हो सकता. Negative भी नहीं possible. We only have this positive x value possible. So we say x equals square root of 3 times a. That's what we're looking for. A is outside the square root. Okay, the diagram shows the curve x square plus y square whole raised to power 2 that equals 2 into x square minus y square. This is one of the maximum points. We have to find the coordinates of this point. Again, maximum point find करना है, differentiate करेंगे equal to 0 करना है, ठीक है? Again, y subject नहीं है, implicit differentiation करनी पड़ेगी. Let's differentiate both sides. Left side पे क्या है? We've got a power. 2 आके बाहर multiply हो गया. Power में से 1 minus कर दिया, so it becomes 1. Expand कर सकते हैं, but why would you want to do that? उसके बगैर भी हो जाता है. Expand करके इसकी जरूरत नहीं है ना, extra step होता है. But you should still get the correct answer from that. इसमें कोई मसला नहीं है, कर सकता है. 2 into x square plus y square, power 1 होगी, 2 में से 1 minus कर दिया. And then you multiply with the derivative of what is inside. X square का derivative 2x, y square का derivative 2y into dy over dx. Okay, so that's the derivative of the left side. What do we have on the right side? 2 into x square minus y square. अब इस पे तो कोई पावर नहीं है, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें. x square का डेरिवेटिव 2x, y square का डेरिवेटिव 2y into dy over dx. Any problem with this? ठीक है? Okay. Now this becomes 2x square. In fact, 2 to cancel, okay? This 2 and this 2, they get cancelled. And we have 2x cubed plus 2x square y dy over dx plus 2xy square plus 2y cubed
dy over dx. इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? You get these four terms. On the right side, we have 2x minus 2y into dy over dx. Is this okay? Any problems with this? Now, since we're looking for the derivative, dy over dx हमें चाहिए, उसको subject बनाना है. तो dy over dx वाली terms को इकट्ठा लिख लें. We have 2x square y plus 2y cube from these two terms. Okay. And the rest of the terms go to the right side. In fact, 2y ये भी है यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर, वो भी इधर ले आते हैं plus 2y. ठीक है, so I'm taking this term and this term together. इन तीनों को लेफ्ट साइड पे ले आया और इसमें से dy और dx कॉमन ले लिया. ठीक है. Now that equals 2x minus 2x cube minus 2xy square. अच्छा, ये 2 तो सारे कैंसिल हो सकते हैं ना, 2 कॉमन आ जाएगा और वो दोनों साइड्स पे 2 कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर सकते हैं. If you want, you can do that. Otherwise, we have dy over dx equals 2x minus 2x cube minus 2xy square divided by 2x square y plus 2y cube plus 2y. Now what we do is we put the derivative equal to 0. Why? Because we were looking for the turning point. So dy over dx को 0 कर दिया. And now this gives us 2x minus 2x cube minus 2xy square equal to 0, because ये जो denominator है वो जाके multiply होगा 0 के साथ, वो तो वैसे 0 हो जाएगा. So this is what we end up with. यहाँ तक clear है? Now 2 can be eliminated because सब के अंदर 2 आ रहे हैं, इसको simplify करके हम लिख सकते हैं. In fact, 2x कॉमन ले लेते हैं. चलिए 2x कॉमन ले लिया. We have 1 minus x square minus y square equals 0. Either 2x equals 0 or 1 minus x square minus y square equals 0. This gives us x equals 0 and this gives us x square plus y square equals 1. Now, what were we looking for? We were looking for the coordinates of the point M. Can x be 0? X 0 नहीं हो सकता, right? It's something positive. So we ignore this possibility. ये इसको ignore कर देते हैं. This is not possible. Now you've got one equation here, and another equation is this original curve. Curve को भी satisfy करता है वो point M. इन दोनों को simultaneously solve कर लेंगे. एक ये equation आ गई, दूसरी equation was x square plus y square whole square plus x square minus y square. No, it was equal to 2 into x square minus y square. This was the equation, right? This is our second equation. इसमें input कर दें वो. इससे आपके पास आ जाएगा y square equals 1 minus x square. You can just input that here and say let's input y square equals 1 minus x square in this second equation. Now what does this give us? This gives us x square plus 1 minus x square whole square equals 2 into x square minus 1 plus x square, and that is 1 equal to 2 into 2x square minus 1. 4x square minus 1 equals 1. X square equals 1 over 2. Is that correct? Okay, is there something wrong here?
क्या नहीं होना चाहिए था? 2 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे. So there was not 2 there. नहीं 2 तो है यहाँ पे. 2 नहीं होना चाहिए. -2, yes. This is -2. This should have been -2. So x square equals 3 over 4, and then x equals plus minus square root of 3 over 2. Again, क्योंकि x positive है, we only consider the positive value. X equals square root of 3 over 2. ये x कोऑर्डिनेट आ गया. इसको पुट कर दें वापस इक्वेशन 1 के अंदर. y कोऑर्डिनेट चाहिए हमें. Yeah, we need both coordinates. Y square equals 1 minus square root of 3 over 2 whole square. ये आ जाएगा y square equals 1 minus 3 over 4, which is 1 over 4. Again, y equals 1 over 2. क्योंकि y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे. This is what we get. So the coordinates of m turn out to be square root of 3 over 2 and 1 over 2. This is what we were looking for. The polynomial f of x is of the form. So Khadija is just wondering कि उनसे एक क्लास नहीं खत्म हो रही है, एक और क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं. X minus 2 whole square into g of x. We've got this function. X minus 2 whole square into g of x, where g of x is another polynomial, so that x minus 2 is a factor of f dash of x. Okay. How do we show this? F of x का derivative क्या होगा? It's a product. We've got u into v. Derivative is uv dash plus u dash v. U as it is x minus 2 whole square into the derivative of v, g of x का derivative g dash of x. Okay. Plus u का derivative, which is 2 into x minus 2 into 1. And then v as it is g of x आपके पास वैसे आ. This is f dash of x. ये आपके पास f dash of x का derivative. Now we have to show that x minus 2 is a factor of this derivative. How do we show that? x minus 2 common ले लें. x minus 2 common ले लिया तो आपके पास आ गया x minus 2 into g dash of x inside plus 2g of x. तो ये आपका f dash के अंदर ये फैक्टर बन गया, and that's what we had to show. ठीक है, उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया ना. फैक्टराइज्ड फॉर्म के दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आपने बना दिया. Each of these is a factor. ये भी एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है. So x minus 2 is one of the two factors. Okay, now the second part says this polynomial where a and b are constants has a factor x minus 2 whole square. Using the factor theorem and the result of part 1 or otherwise find the values of a and b. अच्छा, जब इसने और otherwise कुछ कहा हो ना, उसको आप ignore कर दिया करें, because जो भी otherwise method होगा that's going to be much more complicated. तो उसने suggest किया हुआ, that's what you should be using. Okay. So we have this polynomial. इसका एक फैक्टर गिवन है x minus 2 whole square. Can we get an equation from this? इसको हम p of x अगर कह लें या इसको f of x कह लेते हैं. Let's say this is our polynomial x raised to power 5 plus ax raised to power 4 plus 3x cubed plus bx square plus a. This is the polynomial. Now we are given that x minus
2 whole square is a factor. इसको equal to 0 input कर दें, x minus 2 equal 0. क्या वैल्यू आती है x की? 2. वो उसके अंदर जाके input कर दें. Remember factor theorem and remainder theorem. Remainder theorem क्या होता था? अगर आप किसी factor से divide करते हो, आप x minus 2 से divide करते हो, for instance, तो remainder 0 आना चाहिए. That's what the factor theorem was. Remainder theorem क्या था? अगर आप linear factor से divide करते हो, तो remainder कैसे आ सकता है आपके पास? Directly without actually doing the division. आपने इसको 0 से equate करना है. x की जो वैल्यू आती है उसको उसके अंदर इनपुट कर देना है. f of 2 जो है वो आप फाइंड कर लें. Is that clear? f of 2 आपको क्या देगा? f of 2 आपको रिमाइंडर देगा when you are dividing by x minus 2 या x minus 2 का whole square. That's what the remainder theorem is. इसके अंदर इनपुट करते हैं. We have 2 raised to power 5 plus a into 2 raised to power 4 plus 3 into 2 cube plus b into 2 squared plus a. Now since x minus 2 is a factor, ये चीज 0 से इक्वल होनी चाहिए. हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया. We get 32 plus 16a plus 24 plus 4b plus a. A और b में एक इक्वेशन आ गई. This is 17a plus 4b something wrong. 32 plus 24, 56. So that goes to the other side. That's minus 56. ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है. Is this clear to everyone? This is factor theorem. X minus 2 whole square factor था. हमने x की वैल्यू 2 इनपुट कर दी. पोलिनोमियल के अंदर रिजल्ट 0 आना चाहिए because the remainder should be 0. ठीक है? Okay. उसने क्या and use the result of part 1. Part 1 अब हमारे पास a और b की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. We have got one equation. एक इक्वेशन तो वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते. We need another equation. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो जो इस फॉर्म के अंदर हो, x minus 2 whole square into g of x. इसका क्या मतलब है? f of x का x minus 2 whole square फैक्टर है. सही मतलब है ना? f of x का x minus 2 whole square फैक्टर है. And that's what we are given in the second part as well. ये जो polynomial है इसका x minus 2 whole square फैक्टर है. If we have a polynomial that has x minus 2 whole square as a factor, जो उसका derivative होगा x minus 2 उसका भी फैक्टर होगा. Does that make sense? उसने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करवाया हमसे? Let me write that in words here. So from part 1 we know if x minus 2 whole square is a factor of f of x, what that implies is x minus 2 is a factor of f dash of x. Okay, that's what we've done in the first part. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास f तो है, this is f of x. We can differentiate it और उसमें दोबारा फैक्टर थ्योरम लगा देंगे because x minus 2 उसका भी फैक्टर है. So we find the derivative, f dash find कर लें. f dash of x क्या होगा? x raised to power 5 का derivative, 5x raised to power 4. ax raised to power 4, that is going to become 4ax cubed plus 9x square plus
2bx. What about the derivative of a? That is 0. That's 0. So we have this left. X minus 2 is a factor. X minus 2 should be a factor of f dash of x from this thing that we proved in the first part. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू 2 इनपुट कर देंगे, इसके अंदर x की वैल्यू 2 इनपुट कर दें, उसका रिजल्ट भी आपके पास 0 होना चाहिए. यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी गेट 5 into 2 raised to power 4 plus 4a into 2 raised to power 3 plus 9 into 2 raised to power 2 plus 2b into 2. What do we get from this? 2 raised to power 4 is 16. 16 into 5 is 80. Plus 8 into 4, that's 32a. Plus 4 into 9, that's 36. Plus 4b equals 0. And we get 32a plus 4b equals minus 116. And that is 8a plus b equals minus 29. Right? Yes. This is the second equation. We've got two equations. एक equation हमारे पास आ गई थी 17a plus 4b equals minus 56. And now we've got another equation that is 8a plus b equals minus 29. You will solve these two equations simultaneously. आपके पास एक a की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी. Parametric equations of a curve are given. X equals this and y equals this. Where a is a positive constant, we first have to express dy over dx in terms of t. So you've got parametric equations, दो different equations हैं. आप क्या करोगे, दोनों का अलग-अलग differentiate कर लोगे, and then you'll use the chain rule to find dy over dx. Let's do that. That's pretty straightforward. The first part, x equals a cos raised to power 4 t and y equals a sine raised to power 4 t. Now a is a constant. Constant multiply हो रहा है. इसको अगर हमने differentiate करना हो, the first thing we should actually do here is we should write it as a power. So we can say this is x equals a into cos t whole raised to power 4, and this is y equals a sine t whole raised to power 4. Right? That will make it easier to think about it. क्योंकि अब आपको नजर आ रहा है clearly. Power is the outer function, so we start from that. Power 4 है. Constant जो multiply हो रहा है वो तो वैसे ही रहेगा. 4 gets multiplied. Cos t जो है वो it remains as it is. We subtract 1 from the power. And then we multiply with the derivative of what is inside the power. Cos t का derivative क्या है? It's minus sine t. This is dx over dt. We can simplify this and we get 4a cos cube t into sine t. We also have a negative sign there. We can put that aside. This is what we have. Minus 4a cos cube t sine t, that's dx over dt. Similarly, we can find dy over dt. Constant remains as it is. Power gets multiplied, 4 bahar aa gaya, into sine t as it is. Subtract 1 from the power, multiplied by the derivative of what is inside the power. Sine t ka derivative is cos t. We multiply with that, and we get 4a sine cube t into cos t. That's dy over dt. So we have dx over dt and we have dy over dt. How do we find dy over dx? We use the chain rule, right? So dy over dx equals dy over dt into dt over dx. That's what the chain rule is. We just apply this now. Dy over dt,
that is 4a sine cube t into cos t. This multiplied by dt over dx. So basically, iska reciprocal 1 over minus 4a cos cube t into sine t. This is what we have. We can do some cancellation now. 4 and 4 get cancelled. A भी cancel हो गया. Sine की एक power cancel हो गई यहाँ से. The sine t gets cancelled. Cos cancel हो गया. उसकी एक power cancel. Right. So we are basically left with minus sine square t divided by cos square t. Right. Minus sign यहाँ से आ रहा है. ये minus sign जो नीचे था denominator के अंदर. We can put that outside with the whole fraction. This is what we get. जिसने क्या कहा था, express this in terms of t. आप इसको tan की फॉर्म में भी लिख सकते हो if you want. It's actually the same thing as saying minus tan square t, or you can just leave it like that. This is also fine. This is also fine. दोनों तरफ छोड़ सकते हो. Okay, now the second part says, this was 3 marks, which is quite a lot of work for 3 marks, but this is paper 3, you can expect that. ऐसे होता है इसमें. Show that the equation of the tangent to the curve at the point with parameter t is this. Tangent की equation चाहिए. With parameter t, मतलब t की terms में आपके पास सारा आएगा. t की कोई value नहीं बताई उसने specific. t की terms में आएगा जो भी आएगा. Does that make sense? No? Okay. Now, what do we need for the equation of a tangent? Tangent is a straight line. Straight line के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, gradient and 1 point. Gradient and 1 point. X and Y coordinates, right? 2 coordinates. Gradient है हमारे पास. ये gradient आ गया, right? Tan minus tan square t या फिर minus sin square t over cos square t. We've got the gradient, and we also have the points. X की value ये, A की terms में of course, और Y की value ये. We can just apply the equation of line wala formula. This is the second part. We know the gradient is equal to. अच्छा देखिए उसने जो फॉर्म मांगी है उसमें साइन और कॉज आ रहे हैं सर, उसमें tan नहीं आ रहा, तो आप ग्रेडियंट की यही वाली फॉर्म यूज कर लें, साइन और कॉज वाली. tan में कन्वर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है. You can say this is minus sin square t over cos square t. That is the gradient. You've got the value of x given. X क्या है? A cos raised to power 4t. And y is a sin raised to power 4t. ठीक है, ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है. If you were given a specific value of t, उसने t की वैल्यू बताई होती तो आप इसमें इनपुट करते और आपके पास x की वैल्यू आ जाती in terms of a. लेकिन यहाँ पे उसने कहा है you just have to use the parameter t, यानी कि t के terms में आपने आंसर देना है. It doesn't have to be a specific value there, right? So आपने इसको as it is input कर देना है. Equation of tangent के formula के अंदर you've got the gradient, you've got the x coordinate, you've got the y coordinate. Now what's the straight line form? Y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus y1 is a sine raised to power 4t. Gradient is minus sine square t over cos square t into x minus a cos raised to power 4t. So this was our m. This was x1. And this is y1. Yeah, Mr. Input कर दिया इसके अंदर. This is the equation of the tangent. But now the form that's given in the question, that's slightly different. हम उस form में इसको convert कर देते हैं. अब यहाँ पे देख लें क्या आ रहा है. I can just copy this here. So we have this in front. This is what we want at the end. हमें ये form चाहिए end पे इसमें convert करना. Okay. So let's keep it here. Now, what do we do for this? एक तो fraction नहीं है यहाँ पे कोई भी, right? तो आप ये cos square t को multiply कर दें ताकि fraction खत्म हो जाए. So that's what we start from. We say this is y cos square t minus a sine raised to the power 4t into cos square t. That equals minus, अब ये sin square t को अंदर multiply कर दें, it becomes x
sin square t plus a sin square t into cos raised to power 4t. Any problems until this point? We've just gotten rid of the fraction, denominator से multiply कर दिया. This is what we end up with. Is that okay? Numerator में I've just multiplied these two. ये मैंने अंदर multiply कर दिया. इसको multiply कर देंगे तो ये हमारे पास right side पे आ गया. Okay. Now again we want this form. अच्छा इस form में देखें x and y are on the left side. X और y left side पे, right side पे x y नहीं आ रहा. So that gives you a hint कि अच्छा x y terms एक side पे ले जाते हैं. So you can have this x sin square t on the left side as well. It gives you x sin square t plus y cos square t. Everything else on the other side. So you have a sin square t into cos raised to power 4t plus a sin raised to power 4t into cos square t. Now the left side is exactly the same as what we have here. वो तो हमारे पास आ गया. अब right side पे हमें किसी तरह से prove करना है कि this is equivalent to this. Yes, so we can take something common from these two terms. Let's do that. Left side पे तो वही रहेगा. On the right side, you can take a common, and you can take sin square t common, and you can also take cos square t common. What are we left with? Cos square t plus sin square t, and that is 1. ये चीज क्या होती है? We know cos square plus sin square, that equals 1. We have the identity. ये तो 1 हो जाएगा. What are we left with? We're left with x sin square t plus y cos square t equals a sin square t into cos square t. This is what we had to show. Hence, show that if the tangent meets the x-axis at P and the y-axis at Q, then OP plus OQ is equal to A, where O is the origin. Now, what do we do for this? Tangent meets the x-axis at P and it meets the y-axis at Q. How do you find that? Yeah, so we're basically looking for the x-intercept and for the y-intercept, right? Meets the x-axis का मतलब है हमें x-intercept चाहिए, meets the y-axis का मतलब है y-intercept चाहिए. How do you find x-intercept? You put y equal to 0. How do you find the y-intercept? You put x equal to 0. तो हम ये दोनों करेंगे. एक दफा x equal to 0 इनपुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, एक दफा y equal to 0 इनपुट कर देंगे. We'll get some values. वो coordinates होंगे P और Q के. Does that make sense? Okay, so we have the equation of the tangent. We've got the equation of the tangent. एक दफा हम क्या करते हैं इसके अंदर? We put x equal to 0. एक दफा क्या करते हैं? We put y equal to 0. So this is how we start. X की value 0 input कर दें तो we get 0 plus y cos square t equals a sin square t cos square t. Now cos square t goes to the other side, it gets divided, and that gives us y equal to a sin square t. If we put y equal to 0, we get x sin square t plus 0. That equals a sin square t cos square t. Again, sin square t जाके divide हो जाएगा दूसरी side के ऊपर, and you get x equal to a cos square t. अब x intercept क्या था आपके पास? X intercept was P, the y intercept was Q. So this is your x intercept. ये हमने किया था for y intercept पहला वाला, और ये हमने y equal to 0 इनपुट करके क्या देखा था? X intercept. Now the x intercept was P. P के coordinates क्या हो गए? A cos square t and 0.
and the y-intercept was q, that is 0 and a sine square t. ये आपके पास दोनों के coordinates आ गए, p के coordinates और q के coordinates. Now what do you have to do? You have to show that OP plus OQ is equal to A. OP is the distance of P from the origin. OQ is the distance of Q from the origin. ठीक है, origin से दोनों के distances हैं. P x axis के ऊपर है. So if you were to just make a rough sketch for this, इस तरह का कुछ लग रहा है ये. Yes, आपको distance formula लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि these are just horizontal and vertical distances. This point is P, this point is Q. Q का coordinate क्या है? A sin square T. P का coordinate क्या है यहाँ पे? A cos square T. If you want, you can apply the distance formulas for OP and OQ separately. लेकिन देखिए horizontal distance है और vertical distance है, आपको distance formula की जरूरत नहीं है, आपको directly नजर आ रहा है ग्राफ से OP की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी. So we have to find OP plus OQ. ये आपने शो करना है. उसने कहा है OP plus OQ equals A. This is something that you have to show. So you don't start from that. आपने ये नहीं लिख देना कि OP plus OQ equals A और फिर आप उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करें. ये आपने प्रूव करना है कि OP plus OQ की जो वैल्यू आती है that is equal to O. Now what is OP? O से P का distance, that's A cos square T. O से Q का distance is A sin square T. You can take A common, that gives us cos square T plus sin square T. Now cos square plus sin square, that equals 1. So you have this equal to A. OP plus OQ, इसके value आपके पास आ गई A. This is what we had to prove. This is the third part. Y equals e raised to power minus 2x tan x for x between 0 and pi over 2. We first have to obtain an expression for dy over dx and show that it can be written in this form, where a and b are constant. It's for differentiate karna, dy over dx find karna. Okay, how do we do that? It's a product. We'll have to apply the product rule for this. dy over dx. We can say this is u, this is v. It's going to be uv dash plus u dash v. U as it is, e raised to power minus 2x, derivative of tan x, which is sec. I'm not sure. No, we haven't. E raised to power minus 2x into secant square x, then derivative of e raised to power minus 2x, that's e raised to minus 2x into minus 2 into tan x as it is. Now this gives us e raised to power minus 2x common, and we have secant square x minus 2 tan x. Secant square को आप tan में convert कर सकते हो. What secant square? आपके पास ये identity होती है. 1 plus tan square theta is identical to secant square theta. You got this given in the formula sheet, but by now you should actually remember this. 1 plus secant square theta is equal to tan square theta. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे secant square को convert कर सकते हो tan square में, so it becomes 1 plus tan square x minus 2 tan x. This is what we have. Okay. अब उसने क्या कहा है? उसने कहा ये आपने प्रूफ करना, ये आपने इस फॉर्म में लिखना है. इसमें क्या आ रहा है? You've got a whole square. Whole square आ रहा है. इसका मतलब ये है, yes, so this thing in the bracket, it's actually a perfect square. इसको आप इस तरह से perfect square में convert कर सकते हैं. How do you do that? This is the form a square plus b square minus 2ab. ये वो वाली form है basically. If you can recognize that directly, that's good. You would actually do it like this. You could say this is 1 square plus tan x का whole square, that's a square plus b square minus 2 into a into b. Right? देखिए वही फॉर्म बन गई, a square plus b square minus 2ab. Does that make sense? तो इसको आप लिख सकते हो किस तरह से?
1 minus tan x whole squared. ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. Now the second part says, explain why the gradient of the curve is never negative. What's the gradient of the curve? It's dy over dx. dy over dx equals e raised to power minus 2x into 1 minus tan x whole square. dy over dx क्या represent कर रहा होता है? Curve का gradient. Why is this thing never negative? एक तो स्क्वायर है, ये तो हमारे पास ही आ गया. इसके लिए हम उसने क्या एक्सप्लेन करना है आपने, so you have to write down the reasoning for this. अच्छा, ये पॉजिटिव है हमेशा. क्यों हमेशा पॉजिटिव है? इट्स अ स्क्वायर. इट्स अ स्क्वायर. अ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट, 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता. इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. What about this thing? E raised to power minus 2x. This can never be, this always has to be positive. 0 भी नहीं हो सकता है. It has to be always positive. What's the reason for that? Positive number, E is a positive number. E is 2.71 something. किसी भी positive number की आप जो मर्जी power ले लो, it can never be negative. Right? For example, अगर मैं 2 raised to power कुछ भी कर दूं, power let's say -5 कर लेता हूं, 2 raised to power -5, negative power भी ले लेता हूं. That's the same thing as saying 1 over 2 raised to power 5 and that's 1 over 32. Negative number फिर भी नहीं बनता. Right? Power negative भी होगी तो वो number फिर भी positive आएगा आपके पास eventually. So what do you write here then? You say E is a positive number, so power of a positive number is always positive. ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की जो मर्जी पावर ले लो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. आपने इंडिविजुअली दोनों को प्रूव कर दिया, दोनों चीजें या तो पॉजिटिव है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. दैट मींस द होल ग्रेडियंट शुड बी greater than or equal to 0. दोनों को इंडिविजुअली आपने बस ये प्रूव करना था. That's a 1 mark question. This explanation is enough. Is that okay? Last part. Find the value of x for which the gradient is least. What does that mean now? Gradient is least. Okay. आपके पास dy by dx आ गया. dy by dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये आपका ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ग्रेडियंट का फंक्शन है e raised to power minus 2x into 1 minus tan x whole squared. That's the gradient function. आपने उसने आपसे क्या कहा है? Find the value of x for which the gradient is least. यानी ग्रेडियंट का टर्निंग पॉइंट निकालना है आपने. Now we're not talking about the original function anymore. We're talking about the gradient. Gradient का turning point find करना. Is that okay? अगर हम gradient को किसी और letters से represent कर लें, let's say we have g of x equals e raised to power minus 2x. तो इसका turning point हम कैसे निकालेंगे? इसका differentiate करेंगे और equal to 0 input कर देंगे, उसको solve कर लेंगे. But why is it 1 mark? There must be another. Yeah, that's actually correct. हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया है कि ठीक है, ये E वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होएगा और ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसकी मिनिमम वैल्यू इज 0. तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. Does that make sense? तो आपको सेकंड डिफरेंशिएट करने की जरूरत, सेकंड डिफरेंशिएट निकालने की जरूरत नहीं. इफ यू वांटेड यू कुड डू दैट, बट दैट्स गोइंग टू बी लॉन्गर. आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से, तो उसको इक्वल करेंगे. इट्स क्विकर तो जस्ट डू इट डायरेक्टली. आप कहेंगे लीस्ट ग्रेडियंट क्या है? लीस्ट ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस रीजनिंग जो हमने पिछले पार्ट में देखी थी, राइट?
सो हम इस पूरे ग्रेडियंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं, उस पर देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ग्रेडियंट को आपने 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है, उस पे x की वैल्यू देखिए। Now what do you get from this? Either e raised to power minus 2x equals 0, which is not possible, यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। And from here you get 1 minus tan x whole squared equals 0, 1 minus tan x equals 0, tan x equals 1, x has to be between 0 and pi over 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सर, तो इसका जो भी एक्यूट एंगल आता है वो आप लिख दोगे डायरेक्टली, इट्स गोइंग टू बी pi over 4, okay, because it's given in the question कि x is between 0 and pi over 2। तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, दैट्स pi over 4।